So good evening everyone. यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग और सबसे पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। इकोनॉमिक कैलेंडर और 6:45 को प्रीवियस इंटरेस्ट रेट्स वर 2% एंड एक्सपेक्टेशन था कि 2.15% एक्सपेक्टेशन था कि इस बार 2.15 ही रहेगा और एक्चुअल नंबर इज आल्सो 2.15%। यानी कि इंटरेस्ट रेट जो सोचा था उस हिसाब से ही मेंटेन किया है, वहीं के वहीं रखा है, राइट, अनचेंज्ड है। अब जो भी डिसीजंस लिया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्स। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सो सेंट्रल बैंक की जो सेंट्रल बैंक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको एक बार देख लेते हैं एंड उसके बेस पर डिस्कस करते जाएंगे कि आगे क्या होना चाहिए। Tradition of strengthening ties with Europe past 2 days. It's part of its tradition of the European nature of our institution. The fourth time Italy has the pleasure and we have to turn on the camera and the microphones, and with that I hand over to President Lagarde, please. Grazie mille. Thank you, Wolfgang. So ये है इनकी गवर्नर क्रिस्टीन लगार्ड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की गवर्नर, एंड good afternoon to all of you. The Vice President and I welcome you to our press conference. I would like to thank Governor Panetta for the kind hospitality he offered and express our special gratitude to all his staff for the excellent organization of today's meeting of the Governing Council. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. Inflation remains close to our 2% medium-term target, and our assessment of the inflation outlook is broadly unchanged. The economy has continued to grow despite the challenging global environment. The robust labor market, solid private sector balance sheets, and our past interest rate cuts remain important sources of resilience. However, the outlook is still uncertain, owing particularly to ongoing global trade disputes and geopolitical tensions. We are determined to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term. We will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook and the risks surrounding it in light of the incoming economic and financial data, as well as the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to any particular rate path. The decisions taken today are set out in a press release available on our website. I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and we will then explain our assessment of financial and monetary conditions. The economy grew by 0.2% in the third quarter of the year, according to Eurostat's preliminary flash estimates published today. The services sector continued to grow, boosted by strong tourism and especially by a pickup in digital services. According to surveys, the pickup reflects the fact that many firms have stepped up efforts to modernize their IT infrastructure and integrate artificial intelligence into their operations. Meanwhile, manufacturing
was held back by higher tariffs, still heightened uncertainty, and a stronger euro. The divergence between domestic and external demand is likely to persist in the near term. The economy should benefit from consumers spending more as real incomes rise. Unemployment at 6.3% in September remains close to its historical low, even though demand for labor has cooled. Households continue to save an unusually large proportion of their incomes, which should give them greater margin to increase spending further. Substantial government expenditure on infrastructure and defense, as well as our past interest rate cuts, should underpin investment. By contrast, the global environment is likely to remain a drag. Goods exports declined from March to August, reversing the earlier front-loading of international trade ahead of recent tariff increases. New export orders in manufacturing point to further declines. The full impact of higher tariffs on euro area exports and manufacturing investment will only become visible over time. The Governing Council stresses the urgent need to strengthen the euro area and its economy in the present geopolitical environment. And we welcome European Union leaders reaffirming this ambition at last week's Euro Summit. Fiscal and structural policies should boost productivity, competitiveness, and resilience. It is essential to implement the European Commission's competitiveness roadmap swiftly. Governments should prioritize growth-enhancing structural reforms and strategic investment while ensuring sustainable public finances. So see, ये जो स्टेटमेंट है, लास्ट वाला स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज ग्रोथ, ठीक है? तो ये प्रो ग्रोथ स्टैंस है जो लास्ट पॉलिसी में भी डिस्कस किया था कि इनका जो स्टैंस है वो प्रो ग्रोथ है. प्रो ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ बढ़ाए उस तरफ. तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. It is also vital to foster further capital market integration by completing the Savings and Investments Union and the Banking Union to an ambitious timetable, and to rapidly adopt the regulation on the establishment of the digital euro. The Governing Council is committed to making retail and wholesale central bank money fit for the digital age. In this vein, the Governing Council project. This will ensure technical readiness for potential issuance and stood. The details of this decision. Looking at inflation now. Annual inflation increased to 2.2% in September, from 2% in August. This was mainly because energy prices fell by less than before. Energy price inflation was minus 0.4% in September, up from minus 2% in August. Meanwhile, food price inflation eased to 3% in September from 3.2% in August. Inflation excluding energy and food rose to 2.4% from 2.3% in August, as services inflation ticked up from 3.1% to 3.2%, while goods inflation was again unchanged at 0.8%. Indicators of underlying inflation remain consistent with our 2% medium-term target. While firms' profits are recovering, labor costs are set to moderate further owing to rising productivity and an easing in wage growth. Forward-looking indicators, such as the ECB's wage tracker and surveys on wage expectations, point to slower wage growth over the remainder of the year and the first half of 2026. स्लोअर वेज ग्रोथ, यानी कि वेज ग्रोथ कम होगा तो खर्चा कम होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा.
Most measures of longer-term inflation expectations continue to stand at around 2%, supporting the stabilization of inflation around our target. Looking at risks now. The EU-US trade deal reached over the summer, the recently announced ceasefire in the Middle East, and today's announcement of progress in the US-China trade negotiations have mitigated some of the downside risks to economic growth. At the same time, the still volatile global trade environment could disrupt supply chains, further dampen exports, and weigh on consumption and investment. A deterioration in financial market sentiment could lead to tighter financing conditions, greater risk aversion, and weaker growth. Geopolitical tensions, in particular Russia's unjustified war against Ukraine, remain a major source of uncertainty. By contrast, higher than expected defense and infrastructure spending, together with productivity-enhancing reforms, would add to growth. An improvement in business confidence could stimulate private investment. Sentiment could also be lifted and activity spurred if the remaining geopolitical tensions diminished, or if the remaining trade disputes were resolved faster than expected. The outlook for inflation continues to be more uncertain than usual on account of the still volatile global trade policy environment. A stronger euro could bring down inflation further than expected. In addition, inflation could turn out to be lower if higher tariffs lead to lower demand for euro area exports and induce countries with overcapacity to further increase their exports to the euro area. An increase in volatility and risk aversion in financial markets could weigh on domestic demand and thereby also lower inflation. By contrast, inflation could turn out to be higher if a fragmentation of global supply chains pushed up import prices, curtailed the supply of critical raw materials, and added to capacity constraints in the domestic economy. A boost in defense and infrastructure spending could also raise inflation over the medium term. Extreme देखो, इन्फ्लेशन किस चीज की वजह से ऊपर जा सकता है, किस चीज की वजह से नीचे जा सकता है, दोनों सिनेरियोस बताएं, लेकिन लास्ट में क्या बोला है, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंडिंग की वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा सकता है। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हर गवर्नमेंट को करना चाहिए, खुद से बोल रहे हैं, तो यानी कि गवर्नमेंट करेंगे, इनको फॉलो करेंगे यूजुअली और करेंगे, और वैसे भी करने वाले हैं, काफी टाइम से बात चल रही है, और उसमें ऐड करें कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, राइट। सो टैक्टिकली स्पीकिंग दोनों स्टेटमेंट ऐसे हैं जो हॉकिशनेस की तरफ इशारा करते हैं। weather events and the unfolding climate and nature crisis more broadly could drive up food prices by more than expected. Conditions since our last meeting. Turning to financial and monetary conditions, since our last meeting, market rates have remained broadly unchanged. Our past interest rate cuts have continued to reduce bank lending rates for firms, which average 3.5% in August. Meanwhile, the cost of issuing market-based debt remained at 3.5% in August, as the longer-term yields on which such debt is priced have been relatively stable. The annual growth rate of bank lending to firms edged down to 2.9% in September from 3% in August. At the same time, corporate bond issuance slowed to 3.3% on a yearly area. Credit standards for business loans and about the risks picked up slightly. The average interest rate on new mortgages has growth in mortgage lending ticked up to 2.6% in September from 2.5% in August on the back of a further increase. Growth in broad money, as measured by 0.9%
over the first half of in August, and an average of 3.8 rates and at our 2% target in the medium term. We will follow a data-dependent decisions will be based on our surrounding it, in light of the incoming economic and financial data, as well as the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission. And we are not pre-committing to a particular rate path. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation stabilizes sustainably at our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We are now ready to take your questions. Thank you. Annette Weisbach from CNBC for the first question. Annette, please. President Lagarde, thank you very much for taking my questions. First question would be, of course, on your famous mantra that you're in a good place right now when it comes to the policy stance. So given that private economic activity in your area is not really great, would you say that... It's not really what? Not really great. I mean, if you deduct what comes from the fiscal space, then the economic picture doesn't look so great. So would you say that your policy stance is in a right space if that private economic activity is not picking up? Second question would be on AI and the ramification for the labor market. President Jerome Powell, that he looks very carefully at what AI does to the US labor market. It probably takes a while until this hits here as well, your area, but what do you think, and do you have discussion on that topic? Thank you. Thank you very much for your two questions. Your first question, are we in a good place? I would observe that thanks to the hospitality of Banca d'Italia, we are in a magnificent place, okay? From a monetary policy point of view, we are in a good place. Is it a fixed good place? No, but we will do whatever is needed to make sure that we stay in a good place. And I would observe that with growth of 0.2% for Q3, which is a tad more than what was expected by the consensus, and including Ireland, a little more than what we had expected, not by much, I would not complain too much about growth at this point in time. We can do better. We hope it's better. I observe that there is quite a bit of investment underlying this number, certainly in respect of France, which publishes breakdown. So turning to your other question, which has to do with artificial intelligence, what we are hearing from the corporate telephone surveys in particular that we conduct on a regular basis. So guys, आज मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर बातें जो है वो दूसरे टॉपिक पर हो रही है कंपेयर्ड टू द टॉपिक दैट वी आर लुकिंग फॉर. मेनली हम क्या देखते हैं पॉलिसी में, इन्फ्लेशन के बारे में क्या बात हो रही है, जीडीपी के बारे में या ग्रोथ रेट के बारे में क्या बात हो रही है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बात हो रही है. उसके ऊपर एक दो स्टेटमेंट आए हैं, बाकी सारी बातें जो है वो इधर उधर की हो रही है, एंड आंसर्स जो है वो भी कुछ खास क्लैरिटी के साथ पॉइंट टू द पॉइंट नहीं है. थोड़ा और वेट करेंगे इसके ऊपर कि क्या चल रहा है. और अब तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें बहुत सिंपल सा फंडा है कि ग्रोथ जो है उसके रिलेटेड जो भी नेगेटिव रिस्क्स थे, खास करके जो वॉर चल रहा था मिडिल ईस्ट और वगैरह, वो अब थोड़े हल्के हो गए, यानी कि ग्रोथ के ऊपर जो रिस्क थे वो कम हो गए हैं, तो कंफर्टेबल दिख रहे हैं गवर्नर. और जो इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन में डाउन साइड के रिस्क थोड़े, मतलब इन्फ्लेशन कम होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी वहां पर भी कंफर्ट है कि इन्फ्लेशन जो है वो इस लेवल के आसपास बना रहेगा. तो मोटा मोटी अब तक की पॉलिसी जो है वो हॉकिश रही है. आगे देखते हैं कि क्या कमेंट्स निकल के आते हैं. Is that and this take depending on national, but I think is. The question goes to Jana Rando of Bloomberg. Jana, please. Good afternoon. Thank you very much. I have a question following up on your comment that we are in a good but not yet or not fixed place on policy. You have held rates 3 times now, and I am wondering if you are or would be confident to say that a rate cut is as likely as a rate hike sometime in the future.
And my second question is about risks. You listed quite a few upside and downside risks for both growth and inflation. But I noticed that you didn't speak about a balance. So I'm very interested in hearing your thoughts on whether at least the risks for growth are broadly balanced or more balanced than they used to be, and on inflation as well, of course. Thank you. Thank you. Thank you very much for these two questions. You know, I have said that we are in a good place. I continue to say that we are in a good place. And I repeat that we will take the necessary measures and steps on the basis of data, meeting by meeting, to make sure that we stay in a good place. On your second question, बहुत क्लियर अभी क्या स्टेटमेंट दिया है मैं पहले भी बोला था कि वी आर इन अ गुड प्लेस अभी भी बोल रही हूं वी आर इन अ गुड प्लेस ठीक है तो क्लियर हॉकिश पॉजिटिव स्टेटमेंट है इट्स अ क्लियर हॉकिश पॉजिटिव स्टेटमेंट which has to do with the and I also want to remind you that we have very clearly defined our objective, and that objective is, because you asked me the question about symmetry, our target is symmetric 2% medium term, and we will abide by that objective that we have discussed extensively in 21, reiterated in our 21 strategy review, and reiterated again in 25 when we took stock of our strategy implementation and the stock-taking exercise. On the risk, you are right, because when you go to the section of our monetary policy statement, we list as exhaustively and yet as principally as is possible the number of risks on the downside and on the upside. But what is a little bit different this time around is that our paragraph on risk assessment begins with indicating some of the risks which have faded or have been alleviated in the last few weeks. And it starts with and the impact that it has had in particular. So we start with the EU-US trade deal reached over the summer. We follow with the recently announced ceasefire in the Middle East, and we continue with the announcement today, this morning actually, of progress in the US-China trade negotiations. And we continue with these components have mitigated some of the downside risk to economic growth. So if you remember last time in September, I said that the risk to growth was more balanced and the range had narrowed. I think this time around we acknowledge that some of the downside risk to growth have abated, and we specifically mentioned these three. See, the downside risks to growth have abated this time. Abated का मतलब होता है कि कम हो गया है, चला गया है, ठीक है? तो डाउनसाइड का जो रिस्क है वो कम हो गया है, यानी कि जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा उसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है. I would not necessarily growth जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा उसकी पॉसिबिलिटी का draw the same conclusion for inflation. I think on that front it's a more balanced picture that we paint, and we go through the upside and the downside risk to inflation, and I would suggest that we remain attentive to the occurrence or the risk of occurrence of any of these risks that can weigh on our inflation. Thank you. And the next question goes to Francesco Canepa of Reuters. Francesco, please. So I'm just following up on Jana's question. So what you just said about downside risks to growth abating would suggest that perhaps there was a discussion about changing the balance of risks to say that the risks have perhaps turned to the upside. Was there any such discussion, and why did you not kind of follow through on what you just said in terms of the downside risks to growth abating, or some of them at least? Well, the second question perhaps to Governor Panetta about Italian banks. Italian banks are making great use, take some of those profits with one-off levies. So what are the implications for financial stability and scheme in the process? So I'll address your first question. You remember that last time we referred neither to downside nor to upside, but we said that the balance of risks had
the range of risks had narrowed. And once you've said that, and you said that it is more balanced than it was, you cannot repeat ad nauseum that it is more balanced and more balanced each and every time, which is the reason why we chose to list specifically risk to the downside, risk to the upside, and we acknowledge in the first part of that risk section concerning activity that some of the downside risks that we had with us for quite a while had abated. And I think there was some discussion, as always, on the one hand, on the other hand, some see a little bit more of this, a little bit more of that, but I think we were all in agreement on that identification of risk with a specific listing of those risks. We are in a period of still great uncertainty, and many of those risks are resulting from policies and implementation of policies. So I think that's the best that I can give you in terms of explaining to you why we do not draw a line on, it is one way or the other, and prefer to list those risks carefully. Profit 2010s, but the banks that resulted from that phase are highly profitable, much more. एक और क्वेश्चन लेंगे और फिर अगर कुछ नहीं आया तो फिर कंक्लूड करेंगे पॉलिसी को। मीनवाइल एक बार चैट देख लेते हैं अगर किसी कुछ मैसेज वगैरह है तो। यस, गुड इवनिंग योगेश भाई, गुड इवनिंग पार्थ भाई। GBP USD broke major one-day support today, and I think it will continue and sell at least 500 pips. बात है, क्या बात है, 500 pips, बहुत बढ़िया। What's your point of view? 500 pips का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल हमने जो ट्रेड डिस्कस किया था उसमें हमको एंट्री भी मिल गई थी और वहाँ से जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो भी आ गया है GBP USD का, एंड सेकेंड टारगेट जो है वो अभी दूर है, ठीक है। तो वो ट्रेड हमारा चालू है GBP USD में। अगर वो सेकंड टारगेट आ जाता है तो रफली वी विल मेक अराउंड 100 पिप्स के आसपास का प्रॉफिट हम बना लेंगे, 110 पिप्स के आसपास का, आई गेस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 105 110 पिप का प्रॉफिट हम बना लेंगे। एंड फर्स्ट टारगेट आ चुका है तो उसमें हमने 60 पिप बुक कर लिया है, और हमारा स्टॉप लॉस जो है आपका वो ट्रेल करके आप कॉस्ट पे भी ला सकते हो और जहाँ पे वहीं पे भी रख सकते हो, और 50% क्वांटिटी आप होल्ड कर रहे हो उस ट्रेड में, राइट। सो कल का जो यूएस का ट्रेड था उसमें वो पर्टिकुलर मूव जो है वो चालू है। बाकी आगे 500 पिप का तो मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट से, क्योंकि क्या इवेंट्स होती हैं उस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। यस धर्मेश भाई, गुड इवनिंग। एंड रिटेलर्स आर ऑल्सो ऑन बाय साइड, मौका भी है दस्तूर भी है, आपका क्या कहना है? रिटेलर्स आर यूजुअली ऑन द रॉन्ग साइड एंड दे आर, कल भी हमने देखा था। यूएसडी पॉलिसी इज ऑल्सो हॉकिश, ऑफ कोर्स यूएसडी पॉलिसी हॉकिश है, इसलिए जीबीपी यूएसडी का ट्रेड है। एंड yes, Kirit bhai, hello, and yes, Satish ji, hello, good evening. Yes, so यही comments हैं, और comments तो है नहीं तो बाद में capitalized and much more efficient. So their improvement is the back. I will here in the second row. Thanks for taking my question. I have two questions on the digital euro. The first to President Lagarde. One of the objections of the criticism towards the project, which by the way was raised also by the rapporteur of the regulation in the European Parliament, is that the digital euro is a solution in search of a problem. And its objective might be better realized through market-led solution. And Italian banks have on which commercial money, which is created. If you think of digital euro, it's the digital form of a banknote. People need to have their banknote. Maybe in 10 years' time, there will be fewer of those banknotes in circulation, but they will still need to have the certainty that a euro is a euro is a euro, just like a rose is a rose is a rose. And for me, it is our mission to make sure that money remains that public good that is available to our compatriots. And we are working for the Europeans in that respect. You know, when I hear that it's a project in search of a cause, I think that money as a public good, the sovereignty of the European authorities at large over their currency and the way in which
money stands, this is not a project in search of a cause. It embodies the capacity of Europe to Europe with a currency that is its own. There are many other reasons why the digital euro is perfectly legitimate, valid, and will be cheaper, user-friendly, good for transaction throughout Europe and not just in various countries on a national basis. But the key points for me is money is a public good, central banks are the custodian of that public good, and central money issued by central banks has to have its digital form, because we're moving into a different era where not everybody will want necessarily to have banknotes. Thank you. So Well, last you did not ask me, but I will, before I answer your question, I want to say that I strongly agree with what the President just said. We need public money for the stability of the financial system. So the President is, as always, absolutely right. On the costs, I think it would be unwise to discuss costs before discussing the benefits. Currently, euro area banks only represent 1/3 of total activity on digital payments in the euro area. 2/3 of digital payments in the euro area are intermediated by non-European companies, both for digital payments at the point of sale and digital payments online. Now, the reason why this is so is that European Bank did not agree until now on ways to provide their services to the entire euro area. They don't have what is called in technical terms a rail, the infrastructure to provide, to offer their digital payment services to all European citizens. One of the main benefits, advantages for banks, there are many benefits for consumers, there are benefits for the stability of the financial system. One of the main benefits for the banks in the euro area is that once the digital euro infrastructure will be built, they will be able, by using this so-called open standard infrastructure, to use that rail and compete at European level, thus generating additional business, additional revenues, and there will be many implications in terms of sovereignty for the euro area, in terms of control of the information that travels with your payments. This is the first part of my comment. The second, the costs. Now, there are estimates on the cost of adoption, because the construction of the digital euro will be paid by the euro system. Okay? The cost, I don't know if the estimates which are available are correct, discussed numbers of about 6 billion euros for 4 years. Now, if you think that we have 2,000 banks in the euro area for 4 years, this means that the cost of adoption is a few €100,000 per year per bank. Now, even forgetting the benefits I just mentioned, then the costs of adoption are not so high. They represent overall about 3% of total yearly IT costs for the banks. So then who will pay those costs? Well, it depends on the competition on the payment market. If the digital euro will be introduced, competition will be higher and the banks will not be able to transfer those costs to consumers. So we'll be limited, there will be additional revenues, and then the costs will be allocated depending on competition, and competition will improve. And now a question for Eric Albert of Le Monde. Who, by the way, for those of you who don't know, has been one of the architects of this project, and I pay tribute to him. Eric Albert of Le Monde. Thank you very much. Good afternoon. Transmission of monetary policy is usually 6-9 months, something like that. Your last cut was roughly 4 months ago, and yet monetary condition did tighten a little bit. Are you worried that transmission is hindered somehow, and therefore you're maybe not in such a good place? Or can you just describe what do you think of the transmission? And I just wanted to come back on growth and uncertainty. There's been a few good news, but does it really justify the kind of positive comments you've made about
prospect for growth? It's always more fashionable to make negative comments whenever you have good news. That I understand. But when we have some good news, we have to also acknowledge and draw the consequences and see what impact it has. Because as I said repeatedly, and as we are determined, we are driven by data. We take into account all data, and we measure the impact that it has in terms of outlook, underlying inflation. And I come to you, the first part of your question, because as you know, we maintain this three-pronged approach that we have had to take into account inflation outlook, underlying inflation, and transmission of monetary policy. And I would add to that, you know, since our strategy review, in addition to pure inflation outlook and the identification of our baseline, we also try to identify and measure risks to the baseline, risk to the upside, risk to the downside, and we use different tools in order to do so, including... शुरुआत में इन्होंने एक सेंटेंस बोला, इट इज ऑलवेज फैशनेबल टू गिव नेगेटिव कमेंट्स व्हेन द थिंग्स आर पॉजिटिव. So it is difficult, it is easy to go for negative comments, but I'm not, मतलब उनका ये कहना था कि वो नेगेटिव साइड नहीं जा रही है और पॉजिटिव चीजें हो रही है, तो उसको भी एक्नॉलेज करना जरूरी है. सो टोन इज वेरी क्लियर, इट्स हॉकिश, इट्स पॉजिटिव टोन. बहुत ज्यादा कंफर्ट दिख रहा है चेहरे के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज में और टोन में और स्टेटमेंट्स में, सब जगह पे. So it's clear, it's a hawkish tone, it's a positive policy and positive for the euro. So euro USD को यहाँ पर बाय करना चाहिए. Conclusion of the policy, we are concluding the policy. क्योंकि आज क्वेश्चन में उतनी क्वालिटी नहीं, मजा नहीं आ रहा है सुनने का, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो ऑफ ट्रैक हो रहे हैं. ज्यादातर क्वेश्चंस जो दूसरी साइड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पहले क्लैरिफाई कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की है कि भाई सब कुछ अच्छा ही है अभी आगे, मतलब उस तरीके का बॉडी लैंग्वेज है. सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, हर एक हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, बट बॉडी लैंग्वेज इज सच कि यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर कि दिस इज अ हॉकिश पॉलिसी. एंड हॉकिश पॉलिसी है तो आपको यूरो यूएसडी को लॉन्ग करना चाहिए. यूरो यूएसडी में बाय का ट्रेड बनता है. सेकंड स्टेप होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस. तो सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए चले हैं रिटेल सेंटिमेंट पे. तो यस, तो रिटेल सेंटिमेंट क्या बोल रहा है? यूरो यूएसडी 50-50 एग्जैक्टली 50-50 है, बीच रास्ते में है, बीच मझधार में है. तो यहाँ पर ना कोई मतलब ना कोई कोई साइड मेजॉरिटी नहीं है, ना बाइंग साइड ना सेलिंग साइड, एंड इट्स 50-50. दूसरे एक दो वेबसाइट और देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट का प्रॉब्लम हो, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस. सो लेट्स गो फॉर वन और टू मोर वेबसाइट्स, टू मोर वेबसाइट्स, नॉट वन, टू मोर वेबसाइट्स, तो क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, यूरो यूएसडी यहाँ पर क्या है? 58% लोगों ने सेल किया है. ओके, तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं, वेबसाइट सजेस्ट करें, लेकिन दूसरा एक और वेबसाइट देख लेते हैं. यस, यूरो यूएसडी. ओके, यहाँ पर भी 50-50 है. ठीक है, तो दो वेबसाइट 50-50 दिखा रही है, तो दैट इज द करेक्ट सिनेरियो. सो 50-50 है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए, रादर वेट करना चाहिए. और जब 60-40 का हमारा जो रेशियो है वो सेट हो, तब यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए. 60% ज्यादा लोग जब सेल साइड पे हो तब ये ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना चाहिए. तो फॉर नाउ, अभी के लिए हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं इसमें. तो इस वजह से मैं, हमारा जो तीसरा स्टेप होता है लेवल पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि लेवल्स देखने का कोई मतलब नहीं है. जब रिटेल सेंटिमेंट 60-40 के जोन में आएगा, तब जो लेवल्स होंगे उस हिसाब से ट्रेड बनेगा. अब वो कब आएगा वो नहीं पता हमको. सो यूरोप की पॉलिसी के बेस पर टोन जो है वो हॉकिश रहेगा. आपको ट्रेड लेना है तो लॉन्ग ट्रेड रहेगा, जब भी आपको मौका मिले. तब अभी मौका नहीं बन रहा है. बात कर लेते हैं बाकी दो पॉलिसीज का. तो कल रात को हमने यूएस की पॉलिसी में एनालिसिस किया था. जीबीपी यूएसडी का सेल ट्रेड था, वो ट्रेड अभी चालू है. आपका एक टारगेट आ चुका है, तो आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए.
एंड आपको आज सुबह जो जापान की पॉलिसी थी उसमें भी आपको अग्रेसिव ट्रेडर के जो हमने दो सिनेरियो डिस्कस किए थे, उसमें अग्रेसिव से ट्रेडर वाला जो सिनेरियो था उसमें आपको फर्स्ट एंट्री भी मिल गई थी और आपका उसका फर्स्ट टारगेट भी आ गया और सेकंड टारगेट के लिए अभी थोड़ा दूर है, राइट। सो जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई दोनों के फर्स्ट टारगेट आ चुके हैं, दोनों में एंट्री भी आ गई थी, दोनों में फर्स्ट टारगेट भी आ गया था, दूसरे टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस तरह से अब तक चल रहे हैं दो पॉलिसी के एनालिसिस। यूरोप की पॉलिसी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अब एक बार वापस से चैट पे चला जाता हूँ। Yes, Parth bhai ka question. Again, I am asking this same question, sir. Euro policy is hawkish. That means Euro USD will go up, so it will affect in GBP USD, or we trade what we see. So we trade what we see. Very simple. कल रात को भी यही सवाल आपने पूछा था, यही क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था कि जीबीपी अगर यूरोप की पॉलिसी में हॉकिश आ गया तो क्या करें। आज सचमुच में यूरोप की पॉलिसी हॉकिश आ गई, लेकिन देखो मजे की बात यह है कि कल रात ही एंट्री भी मिल गई जीबीपी यूएसडी वाले ट्रेड में और आज आपको फर्स्ट एग्जिट भी मिल गया। तो वी नेवर नो कि क्या होगा, कभी पता नहीं होता है। और कुछ मौके ऐसे आते हैं जहां पर चीजें अपने तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में भी जाती है। 100% साथ में नहीं चलते हैं, कोरिलेशन भी है वो 90% है। तो काफी बार ऐसा होता है कि एक चीज में फ्लक्चुएशन या मूव पहले आ जाता है, दूसरी चीज में मूव बाद में आता है। सो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जीबीपी यूएसडी में आपने जो ट्रेड लिया हो उसमें आपका फर्स्ट टारगेट तो आ गया, तो वो तो आप निकल गए होगे, बुक कर लिया होगा। अगर आपको ये डर है या थोड़ा कंफ्यूजन है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई मैं जीबीपी यूएसडी के सेल ट्रेड को कैसे होल्ड करूं, तो आप एक काम करो, आपका जो अभी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी उसको कॉस्ट पे ले आओ। कॉस्ट से अभी 20-25 पिप दूर होगा मेरे हिसाब से, तो कॉस्ट पे ले आओ। अगर रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाओगे सेकंड हाफ में, मतलब 50% क्वांटिटी रिमेनिंग क्वांटिटी में, तो भी आपका 50% क्वांटिटी का तो प्रॉफिट बुक हो गया है, तो उतना आपके लिए अच्छा है। और जो यूरो यूएसडी का ट्रेड है वो तो वैसे अभी नहीं बन रहा है, रिटेल ट्रेडर्स अभी सही मूड में नहीं है, तो भले पॉलिसी हॉकिश है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स अभी सेट नहीं है, 50-50 है, तो और प्राइस भी नीचे जा सकता है और जीबीपीयूएसडी को भी नीचे खींच के जा सकता है। सो वी नेवर नो कि क्या होगा, एक करेंसी में जो होगा और दूसरी करेंसी में हो वो जरूरी नहीं है। ऑफकोर्स कोरिलेशन है तो मैटर करता है, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हमेशा। सो आई पर्सनली प्रेफर एंड बिलीव एंड सजेस्ट कि आप ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। आपको फील हो वैसा ट्रेड मत करो, आपको जो दिखे उसको ट्रेड करो, ऑटोमेटिकली जो काम होना है हो जाएगा। बिकॉज द रीजन आई एम सेइंग इज 1 hour ago GBP USD is going aggressive in sell and Euro USD was also going on sell side. That's why I want to ask. I am waiting for TP2. That's why I'm asking. Agreed. I am also waiting for TP2. Everyone is waiting for TP2. But ठीक है, मार्केट है अभी, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। यूजुअली एनालिसिस जो सजेस्ट करता है उसको पकड़ के चलना चाहिए, दैट इज व्हाट इज गुड। क्योंकि क्या होता है ना, देखो ट्रेडिंग में दो चीजों की वजह से प्रॉफिट मिलता है। एक है आपका एनालिसिस, दूसरा है आपका माइंडसेट। अब एनालिसिस तो हम कर लेते हैं, लेकिन माइंडसेट जो है वो बना के रखना बहुत जरूरी होता है। अब माइंडसेट बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, तो जब एनालिसिस जो बोलता है उसको छोड़ के हमको जो लगता है, जब हम वो फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो माइंडसेट खराब होना स्टार्ट होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो माइंडसेट को सही जगह पे बना के रखने के लिए एनालिसिस को फॉलो करना जरूरी है। तो इस वजह से मैंने जो बोला था आपको कि बे ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, उसका सिर्फ एक रीजन यही था। क्योंकि क्या होता है ना, मान लो कि आपको लग रहा है कि यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो जीबीपी ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे चला गया, फॉर एग्जांपल मान लो प्राइस नीचे चला गया, तो क्या होगा, जीबीपी यूएसडी का टारगेट, जीबीपी यूएसडी आपने मिस कर दिया ट्रेड, तो आपको अफसोस होगा, आपका माइंडसेट खराब होगा। अब मान लो कि प्राइस ऊपर चला गया है और आप बच गए, आपने अभी बुक कर लिया हो और आपको थोड़ा प्रॉफिट भी मिल गया, आप बच गए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने सही किया। अब दूसरी बार जब ऐसा मौका आएगा वापस से आप वही चीज करोगे, तो क्या होगा ना, रूल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आप जो रूल्स फॉलो कर रहे हो वो रूल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और एक बार आपका कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट हुआ फिर आप कॉम्प्रोमाइज करने लग जाओगे, ऐसा मान के कि भाई हम जो सोचते हैं वो करना चाहिए, नॉट हमको जो दिखता है वो करना चाहिए। तो गलत आदत जो ना पड़े उसके लिए ज़रूरी है कि हम सही आदत को फॉलो करते रहें, और सही आदत ये है कि आप एनालिसिस को फॉलो करो। तो एनालिसिस जो है वो सजेस्ट कर रहा है उसी को फॉलो करो। हो सकता है कि एनालिसिस के हिसाब से हमको ना भी रिजल्ट मिले, स्टॉप लॉस भी आए, लेकिन ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ एनालिसिस। ओवरऑल परसेंटेज जो है वो अच्छा रहना चाहिए, एक्यूरेसी रेशियो या प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो अच्छा रहना चाहिए, मोर देन 50% रहना चाहिए। रफली 60 से 70 के रेंज में तो अच्छा है, लेकिन 50% से ऊपर रहेगा तो एटलीस्ट विल बी प्रॉफिटेबल।
राइट. सो उस वजह से माइंडसेट को खराब ना करते हुए, डिस्टर्ब ना करते हुए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि गो विद द एनालिसिस रादर देन गोइंग विद व्हाट वी फील. Okay, that is my personal opinion, my personal choice. सबका अपना अपना opinion है. My personal choice is that don't, you know, apply too much brain. बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है और एनालिसिस के साथ स्टिक करना है. हाँ, बस अगर नहीं कंफर्ट आ रहा है तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें टू द कॉस्ट. Okay, I got it, sir. I see GBPS June sales said I'm right on or wrong, let's see. बस तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम है? कॉन्फिडेंस है ना आपको जीबीपीएस सेल साइड पे, बस दैट्स इट. वैसे भी ट्रेड भी वही सजेस्ट कर रहा है जीबीपीएस के नीचे जाना चाहिए और आपको भी कॉन्फिडेंस है, बस तो बढ़िया है. और वैसे भी यूरो का ट्रेड तो अभी बन नहीं रहा है. लेट्स होप कि यूरो का ट्रेड भी मिले हमको और आगे जाते हुए मिले जब प्राइसेस थोड़े नीचे चले गए हो और फिर हमको वहां पर यूरोप का ट्रेड मिले तो और अच्छा होगा. क्योंकि जीबीपी में भी आपका रिजल्ट मिल जाए, आपको जीपीआई में भी रिजल्ट मिल जाए और फिर यूरो का ट्रेड मिले तो फिर क्या ही बात हो जाएगी. राइट. सो लेट्स होप सो कि ऐसा कुछ हो. अभी नहीं मिल रहा है तो अभी के लिए कुछ नहीं करेंगे. Yes, any other doubt, any other question if we have, we can take that. And all the questions that we discuss right now, ये सारे questions मीत को मैंने अभी बोला है तो सेटिंग्स भी उस तरीके का ही है और उस तरीके का ही रहेगा कि जहां पर आप बाद में जब वीडियो अगर देखते हो, लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो, बाद में वीडियो देखते हो तो फिर भी आपको ये चैट दिखेंगी. तो आप जो क्वेश्चंस अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन टाइप किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप देख पाओगे. राइट. कॉन्फिडेंस तो अच्छा है लेकिन यूरो की पॉलिसी हॉक आई है, लेकिन ट्रेड व्हाट यू सी. ठीक है ना. हाँ, यस, ट्रेड व्हाट यू सी. एंड यूरोप की पॉलिसी हॉक आई है तो अच्छी बात है. आप यूरोप पे फोकस करो ना, यूरोप की पॉलिसी के लिए यूरोप पे फोकस करो, बाकी जीबीपी का जो चल रहा है उसको चल रहा है. ऑल राइट. यस, थैंक यू. ओके, तो रिटेल सेंटिमेंट पे नजर रखना और अगर यूरोप में ट्रेड मिले तो लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं. ये रिटेल सेंटिमेंट अगर न्यूट्रल जोन में आए तो यूरो यूएसडी में लॉन्ग ट्रेड बन सकता है. और मेरे हिसाब से या ठीक है. तो मेरे हिसाब से बस उसी चीज़ पे ध्यान रखो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है. हफ्ता तो ऐसे एटलीस्ट अच्छा कट रहा है अब तक, तो पॉलिसीज जो है वो अच्छी कट रही है. सो होपफुली आगे भी अच्छा ही रहेगा. लेट्स होप सो. एंड हियर वी कंक्लूड 3 पॉलिसीज. कल यूएस की पॉलिसी थी, आज जापान की थी और अब यूरोप की पॉलिसी है. तीनों पॉलिसी हम कंक्लूड करते हैं और तीनों यूट्यूब लाइव में आपको मजा आया होगा. एंड ऐसे ही आगे जुड़ते रहिए. हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिए. देखो मेरे सोशल मीडिया टीम मुझे बार बार बोलती है सर कि क्या करें सर, फॉलोअरशिप बढ़ानी है, तो उसमें आपको भी थोड़ा हेल्प करना है. जो भी आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेक्स में इंटरेस्ट है यार, उनको चैनल एटलीस्ट शेयर करो तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे लाइव में और मज़ा आएगा और थोड़े क्वेश्चन आंसर होंगे और डिस्कशन होगा, हेल्दी डिस्कशन होगा और जानने सीखने को मिलेगा हम सबको. तो yes, share it with your friends who are interested in forex trading so that we can connect with more and more people and we can enjoy more. Right? Discussing forex is always a joy, always a passion. So मजा आता है डिस्कस करने में. So yes, that's it from my side. Thank you once again for joining and like, subscribe, share, comment, everything. And see you on Monday in our Monday live market session. Okay? तो लाइव मार्केट क्लास में मंडे को मिलते हैं शाम को 7 बजे, जो हमारी क्लास होती है उसमें. Till then, enjoy. Bye bye. See you.